So students, the other day we had discussed the concept of cost of capital. We started with the concept of it, wherein we discussed the meaning. We discussed the various definitions by various authors, wherein we had discussed about cost of capital concept. So today, in today's lecture, we are going to discuss about significance of cost of capital. What role does cost of capital play? So cost of capital is very important in the decision making of various aspects which relate to the financial management. टॉप मैनेजमेंट के जितने डिसीजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू द लीवरेज, विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, capital budgeting, any of the appraisal of the financial performance. So all of these, they are influenced by the cost of capital. So the first main point of significance of cost of capital is the maximization of value of the firm. फर्म की वैल्यू कैसे मैक्सिमाइज होती है? क्योंकि जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू टेक द कॉस्ट विच इज द मिनिमम. So we try to minimize the average cost of capital, and we choose the mix of debt and equity in the capital structure in such a way that the cost is minimum. That means there is no risk, financial risk upon the business firm, and it directly leads to the value of increase in the value of the firm. Second is your capital budgeting decision. Capital budgeting decisions kya hote hain? We have discussed this before also. What do you mean by capital budgeting? हाँ जी बच्चे, speak up. What are capital budgeting decisions? मैम जिसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग डिसीजंस लेते हैं. Very good. So capital budgeting decisions kya hai? A firm, whenever they are planning to invest their money in a capital expenditure, they are putting in their money in the investment project, they would want to know that what return are they going to get from this project. So return ke liye, they even have to compute that what is the cost of capital, what is the cost that they are putting into in this project. So this is why जो हमारा cost of capital है, that acts as a cut off rate. कि इतनी रिटर्न तो इस प्रोजेक्ट से हमें चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि इतनी रिटर्न होगी तो हमारे इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जौन सी है वो पूरी हो रही है. सो अगर रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वो ज्यादा आती है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन वी accept that project, then we invest our money into that project. Whereas if the return on that project it is less than that, so then we try to avoid that, or maybe we use some other alternative rather than taking or putting in money into that investment. Then comes decision regarding leasing. जब हमने कुछ लीज आउट करना है, हमने कुछ लीज पे लेना है एक बैंक बिजनेस कंसर्न ने, उस केस में भी उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एस्टिमेशन काफी इंपॉर्टेंट रहती है. मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. एज वी ऑल नो, वर्किंग कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी एंटरप्राइज. Each and every business, they need working capital to continue their activities in a daily and in a smooth basis. Working capital is what? Working capital is your excess of current assets or over current liabilities, which means something that you need for the daily working of the business concern. सो जब हमने मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल देख रहे हैं, तब भी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज होता है. कैसे होता है? क्योंकि हमने ये देखना होता है कि जो हमने रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट करी है, जो हमने इन्वेंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करी है, जो हमारे डेटर्स है, जो हमने उनसे पैसे लेने हैं, वेदर वी आर having a fair policy pertaining to that, or should we focus on finding an alternative policy so that the cost is minimized?
Then comes your dividend decisions. Cost of capital, it is also important in taking dividend decisions. I'm not going to explain you these things right now, because we'll be doing a chapter pertaining to dividend policy. उससे आपको ये clear होगा कि आपका cost of capital कैसे use होता है. So there are few policies, there are few theories with respect to the payment of dividend. So dividend के बारे में decide करने के लिए भी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जौन सा है वो काफी मेजर रोल प्ले करता है. Then comes your determination of capital structure. Capital structure refers to how you are getting your capital, what are the various sources that you are using. So the proportion of debt and equity that a business is going to utilize, that is also given importance on the basis of the overall cost of capital or the weighted average cost of capital of the firm. Usually the objective of the firm is to choose a capital structure wherein the overall cost of capital is minimum and the value of the firm that is maximized. Then comes your evaluation of financial performance. It is used by the top management to evaluate the performance when they compare the profitability of the investment project with the overall cost of capital. So that ways they keep on evaluating the financial performance of a business enterprise. But any doubts in this? In any of the points of significance? Any student having any doubt in these 7 points? No, ma'am. Okay, but just give me a moment. So, Hanji students, any doubts in this? In any of the 7 points? No, ma'am. Okay, ji. Now coming to the classification of cost or different types of cost. So one is your historical cost and future cost. Historical cost, as the name suggests, जो past के साथ related है, जो history के साथ related है. Historical cost are the book cost which are related to the past, जो हमने already incur कर चुके हैं. Future cost जो हम estimate करते हैं कि हमारी future में क्या cost रहेगी, these are your future cost. ये estimation किसके basis पे किया जाता है? This estimation is done on the basis of historical cost only. जो हमारी past cost है, उन्हीं के basis के ऊपर हम ये estimate करते हैं कि हमारी future cost कितनी रहेगी. Then comes your specific cost and composite cost. Specific cost for a specific source of capital, whereas composite cost, it is your combined cost. It is the cost of, or it is the combined cost of various sources of कैपिटल. जैसे जब हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग पढ़ेंगे, ये क्या है? ये है आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट. जब हम इनकी इकट्ठे कॉस्ट पढ़ेंगे, जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, वो क्या हो जाएगी? वो हमारी हो जाएगी कॉम्पोजिट कॉस्ट. देन कम्स योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और योर इम्प्लिसिट कॉस्ट. Explicit cost क्या है? Explicit cost is the internal rate of return for a project. जो आपकी internal rate of return है, that is your explicit cost. जो एक चीज आपने imply करी हुई है. Implicit cost क्या है? Implicit cost is the opportunity cost also. जैसे अगर हम लोग बात करें रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में, हमारे पास अर्निंग्स के 2 ऑप्शन रहते हैं. या तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, या हम उनको उनके पास अपने पास रख लें. तो दैट वेज इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगी कि या तो हम दे दें या हम अपने पास रख के उनको कहीं पे इन्वेस्ट कर दें. So we are looking into the opportunity cost of a project. So that is your implicit cost. Then average cost or and your marginal cost. Marginal cost क्या है कि जो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी in order to procure more funds, that would be your marginal cost. Average cost जो हम average calculate करते हैं, जो हम combined cost calculate करते हैं, that is your
average cost. Anyone having any problem in this? Ma'am, explicit cost. Okay. So, but your explicit cost is basically the discount rate, which will equate the present value of cash inflows with the present value of cash outflows. Which means जो आपका internally rate of return है, जिस rate पे आपको return मिल रही है on the project on the basis of that source of finance, something that is explicit, something that is there, that is your explicit cost, something that you are incurring. Whereas your implicit cost is the opportunity cost, which means the cost of the opportunity that is foregone. कि आपने ये चीज ना पिक करके आपने दूसरी चीज पिक करी है. So when you take up a particular project, you are foregoing something, that is your implicit cost. Is this clear? Yes, ma'am. Any other doubts? Then when we are starting with the main topic, which is your computation of cost of capital, we'll be studying it in two major aspects. One would be the computation of cost of specific source of finance, and the second one would be computation of weighted average cost of capital. The very first under the specific source that we are going to discuss, that is your cost of debt. जो आप कहीं से लोन लेते हो, जो आपके डिबेंचर्स हैं, जिन पे आप इंटरेस्ट पे करते हो, कोई आप टर्म लोन लेते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ डेट. कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल को हम डिनोट करते हैं बाय के डी. के उसके पैर में नीचे करके सबस्क्रिप्ट के जैसे वी राइट इट डाउन एज डी. Cost of debt capital is considered as a cheaper source of fund. उसका कॉस्ट कौन सा है वो कम रहता है. क्यों? क्योंकि जो हम इसके ऊपर कॉस्ट डेट डिबेंचर्स के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, दैट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर टैक्सेशन पर्पसेस. So usually the firms, they prefer taking debt. Now when we are talking about computation of cost of debt, हम इसको दो तरह से पढ़ेंगे. एक irredeemable जिसको हम redeem नहीं करने वाले हैं, एक आ जाएगा redeemable जिसको हम redeem करने वाले हैं. So before tax cost of debt क्या है? Before tax cost को हम denote करते हैं as KDB, और आपकी बिफोर टैक्स कॉस्ट क्या आएगी? आई डिवाइडेड बाय एनपी. आई क्या है? आपका इंटरेस्ट. एनपी क्या है? आपका नेट प्रोसीड्स, जो आपको पैसे मिले. अगर हमें जो डेट है हमने इशू किया है प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, तो नेट प्रोसीड्स शुड बी कंसिडर्ड जो एक्चुअली हमें मिली है, रादर देन द फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी. अगर हमें 100 की चीज हमने 90 पे इशू करी तो 90 रुपए लेंगे. 100 की चीज 110 पे इशू करी तो हम नेट प्रोसीड्स 110 लेंगे. Next comes after tax cost of debt. If we are to compute the cost of debt after the taxation, तो साथ में before tax के क्या multiply हो जाएगा? 1 minus t. t is your tax rate. KDA after tax cost of debt अगर निकालनी हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, interest divided by net proceeds into 1 minus t. ये फॉर्मूला समझ आ गया सबको? Have you understood this formula? मैम ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट वाला एक बार ही बता दो. ओके. सो बच्चे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? कि जब हम टैक्सेशन को कंसिडर करके वी आर कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ डेट, there are two ways we can calculate it. Either we multiply before tax cost into 1 minus tax rate, or what we can do is ये before tax वाले फॉर्मूला को खोल लिया, interest divided by net proceeds into 1 minus tax rate. Clear है रिया? यस मैम. Let's look into this question.
X Limited issues rupees 50,000 8% debentures at par. The tax rate applicable to the company is 50%. Compute the cost of capital. हम क्या निकालेंगे, हमें टैक्स रेट यहाँ पे दिया हुआ है तो हम निकालेंगे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. फॉर्मूला क्या है, KDA इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट. नेट प्रोसीड्स कितनी है, 50,000 का हम लोग पार पे इशू कर रहे हैं तो दैट मींस नेट प्रोसीड्स कितनी हो गई आपकी 50,000. इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट है 50,000 का 8%, वो आ गया 4,000. टैक्स रेट कितना है 50%, 50 डिवाइडेड बाय 100 वो कितना हो गया आपका 0.5. फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट. इंटरेस्ट 4,000, नेट प्रोसीड्स 50,000 इनटू 1 माइनस 0.5. 4,000 divided by 50,000 into 0.5. That comes out to be 0.04. जितनी भी कॉस्ट है दैट इज इन परसेंटेज. तो 0.04 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4%. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Coming to the second question, Y Limited issues rupees 50,000 8% debentures at a premium of 10%. 50,000 का 10% कितना हो गया 55,000 ऐड करके, तो हमारी नेट प्रोसीड्स इस बार कितनी हो गई है 55,000. टैक्स रेट इज 60%. वी आर टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल. KDA is equal to interest divided by net proceed into 1 minus tax rate. इंटरेस्ट आपका किस पे लगता है फेस वैल्यू पे, तो 50,000 का किया 8% 4,000. नेट प्रोसीड्स कितनी है 55,000 क्योंकि आपने डिबेंचर्स को इशू किया है प्रीमियम पे. प्रीमियम मींस मोर देन द फेस वैल्यू. So 50,000 plus 10% that comes out to be 55,000 into 1 minus tax rate that means 1 minus 0.6. ये सारा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2.91. Is this clear? Yes, ma'am. Coming to the third part, इसमें आपका आ गया डिस्काउंट. अब आप क्या कर रहे हो, यू आर इशूइंग द डिबेंचर्स एट 5% डिस्काउंट. We are required to compute the cost of debt capital. $50,000 का क्या 5%, वो कितना आ गया 2,500. इंटरेस्ट सेम रहा 4,000. 50,000 में से 2,500 माइनस कर दिया तो नेट प्रोसीड्स मेरे पास कितनी आई है 47,500 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 1 माइनस 0.5. पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 4.21%. The only change is in the amount of net proceeds. सेकंड में प्रीमियम आ गया 10%, थर्ड में डिस्काउंट आ गया 5%. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, ma'am. Okay. Now coming to the last part, B Limited issues rupees 1,09,000 debentures at a premium of 10%. Cost of flotation are 2%. The tax rate applicable is 60%. Compute cost of debt capital. अब इसमें आपका नया पॉइंट क्या आ गया, फ्लोटेशन कॉस्ट, जो आपका खर्चा हुआ उस सिक्योरिटी को इशू करने में. तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नेट प्रोसीड्स में से कर देते हैं माइनस. 1 लाख की चीज 10% प्रीमियम पे इशू करी, कितना हो गया 1,10,000. फ्लोटेशन कॉस्ट 2% ऑफ द मनी दैट यू आर रिसीविंग. 2% ऑफ 1,10,000, तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी आ गई 2,200. 1,10,000 माइनस 2,200, तो हमारी नेट प्रोसीड्स कितनी है 107,800.
इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है 1 लाख का किया 9%, दैट इज 9,000 डिवाइडेड बाय 1,07,800 into 1 minus 0.6. So 9,000 divided by 107,800 into 0.4, it will come out to be 3.34. Any students having any doubt in this question? No, ma'am. Hanji bache, any doubts in the topic that has been taken up today? समझ आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. आ गया. Okay. So make sure you go through the formula. Do you want to take a screenshot of the page of formulas? Yes, ma'am. Let me share the screen. ले लिया बच्चे screenshot? Yes, ma'am. Okay, so make sure you memorize the formula. So tomorrow we'll discuss about redeemable debt. So this is it for today. If in case there are any queries, I can take them up right now. All right then students, I'll be ending this session here. Have a good day.